Hello, everyone. Hi, hi, hi. Yep. So we are live. Okay. So yeah, we are live. So hello, everyone. Joining Yeah, in hi. from different platforms like LinkedIn, YouTube, Twitter. So thanks for joining in. And today we'll start off with another podcast or live session, which we have been doing for some times now, like 5, 6 months, 7 months. So this session for the new people who are joining in, this session is to discuss about the latest updates in the crypto and Web3 space, where the markets are heading, any new news, airdrops. So basically, an overview of the whole Web3 and crypto space, which we'll provide here. And we keep doing on these sessions every week on Thursday around 5 p.m. So do follow us on all the social platforms which you are watching from, like LinkedIn, YouTube, or Twitter. And yeah, make sure that you follow us so that you get these updates every week whenever we are live. So thank you for joining in, and we'll start off this week with some of this news. This week has not been so good compared to the last few weeks that we have seen. We have not seen much of green signals in this week. So we'll discuss that, and we'll also discuss about some of the latest hacks or some of the things which happened, due to which some people may have lost some money or may be losing some money in the future. So without further ado, let's start off with the news section, where we'll cover all the latest upcoming news, and then we'll move on to trading, where Shavik will share his charts for the upcoming markets and what you can expect. So चलिए शुरू करते हैं. So for today, the first news that will be around USDT. So अगर आप लोग क्रिप्टो में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं, so आप सबको USDT के बारे में पता ही होगा, टेदर. सो ओकेक्स ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि दे विल बी डिलिस्टिंग यूएसडीटी फॉर द यूरोपियन यूनियन कस्टमर्स. सो बेसिकली मैं बहुत दिन पहले एक पेपर भी पढ़ रहा था, वेर यूरोपियन यूनियन इज कमिंग अप विद अ स्ट्रैटेजी वेर दे वांट टू promote euro in the crypto space. So that's where they're coming up with different types of stable coins, both as centralized and decentralized stable coins, which will be put in more use by them, which will be integrated into the exchanges protocols, and which will be more favorable for the people living in the European Union to transact and use crypto. So I think that's the first step that we are seeing right now with OKX, delisting USDT. And I think sooner or later we'll see like European Union coming up with their own stable coins and decentralized stable coins which can be used, and the hassle for converting from euro to USDT or another stable coin will be gone. So I think that is a very good move, and a bad move for USDT. So Shavik, what do you have to comment on here? Yeah, actually, they want to remove the dependency from the US dollar, which is a good thing, I suppose. Being as an union, अगर आप इस step को मतलब साथ में लेके जाते हो, तो at certain point, every country wants to do that, but nobody has that power or backup, as you can say. तो ये चीज अगर होता है वहां पे, तो ये तो यूरोपियन यूनियन के लिए अच्छा चीज होगा, राइट? इधर जो थोड़ा सा खराब मतलब न्यूज माना जाएगा, बट अभी देखते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आया है, स्पेकुलेशन ही है मार्केट में. जब कंफर्मेशन Right. आ जाएगा, इस तरह के स्टेबल कॉइन्स पे आ जाएंगे, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उसको, तो सेंटिमेंट कैसे प्ले आउट होता है, तो वो देखना पड़ेगा. Right. सो चलिए देखते हैं हम लोग आगे कि क्या न्यूज़ आता है. बट फिलहाल के लिए तो अगर आप लोग यूरोपियन यूनियन में रहते हैं या वहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, सो आपको लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बिकॉज ओकेक्स इज अ मेजर एक्सचेंज है. सो चलिए हम लोग There are चलते हैं. there are a lot of other exchanges which are या still या allowing. So and yeah, they can avail that. Yeah, I think gradually, as OKX is one of the big players, OKX is trying to abide by all the rules. So I think it is like the first one to do this. But let's see how the news comes up in the coming days. So keep following us. We'll keep on updating you about the same.
in the coming weeks. So चलिए हम लोग उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है, which is like a very positive news, is about Grab. So Grab is like a super app for Southeast Asia's people. I think it's live in Singapore and some of the other South Asian countries. So Grab has introduced crypto payment options in Singapore. So it's just like I think a Uber or Ola, you can say, for India, for Southeast Asia, where you can just top up your wallets and use it to pay for the cab service and all the other service that they offer. So I think now they have started the crypto payments option where you can load your wallets or pay in cryptocurrencies, and I think Bitcoin, Ethereum, USDTs, and other stable coins will also be allowed to be put on their wallet, and you can be used to pay for the services like cabs and other services that they have on the app. So I think this is something which will bring more adoption for the Singapore people. I think there is already a lot of adoptions, right, Shavik? I think there are ATMs and other things where you can go and withdraw. But Yeah, like, yeah. Definitely, it's there already. Bitcoin ATM is already there, so people can withdraw money from their from the ATMs. With this step, inclusion of crypto in the Grab app, it's a remarkable thing, I would say. तो अच्छा ही है इंडिया में भी कुछ ऐसा आ जाए हम लोग वही एक्सपेक्ट करते हैं where we can buy, like we can use it in Swiggy or maybe in Ola or Uber, where we can pay and directly do the things. Yeah, let's see, like somebody or the other will allow it in due time once the regulations are here. Right. So coming up next is about Odyssey. So it's, if somebody don't know here, it's a program that was started by Starbucks. It's like a loyalty program, an NFT loyalty program, with the support of Polygon Labs, which is coming to an end right now. So now a report came up that Polygon had paid Starbucks for around $4 million in 2022 for building and hosting this program Odyssey. uh, this it's just like a loyalty program for them, which where you can get NFTs if you sign up, do certain activities, or become a customer for Starbucks. So this also helped them with all the other partnerships that Polygon had during that time, to get a good market share, people knowing their name, and attracting a lot of customers and users from this kind of big brands. But now Starbucks is planning to close it. And yep, so basically if you have an NFT, I don't think it will have any more value or loyalty on top yeah of it's it. already closed Right, it's already yeah closed, guys. So if you hold any of this Odyssey NFTs, you can check out this link where you can find out what their value will be. But I don't think they will have some value, and it was more like marketing for Polygon, with partnering with Starbucks. So yeah, I think in the coming days we'll also see another, other brands also coming up with loyalty programs with Polygon or other things. But आगे देखते हैं कि बाकी जो programs थे वो चलते हैं या नहीं चलते, या Starbucks is coming up with something new that may be a possibility. So let's see, guys, and we'll keep on updating you about it. Yes. So coming to the next news, it's about BlackRock. So BlackRock is introducing a new tokenized asset fund on Ethereum blockchain. It's with a ticker called BUIDL, 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 and it has launched it in collaboration with a company called Securitize, and you can access it on the Ethereum blockchain under the ticker BUIDL. And yeah, let's see what it goes to, but it's majorly about like an upgradation for their digital asset management. So BlackRock already have a Bitcoin ETF. Now they're trying to bring some of their funds on chain. So let's see what are the assets they put on these funds, and what are the people who will be investing into it. So Shavik, what do you think about this kind of a fund? So yeah people will I be think willing to people put their yeah money. not at this moment
basically there would be some regulation side problem being in India. So that is why for the time being I would stay out of this. लेकिन यह है कि यूजर्स को इसको ट्रैक करते रहना चाहिए कि अगर यहाँ पे कुछ फंड का एक्सपोजर होता है और कुछ किस तरह से वो लोग प्ले आउट कर रहे हैं, एक्सपोजर कहाँ-कहाँ पे दे रहे हैं, इसको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाएगा। व्हिच इज़ अ गुड थिंग आई सपोज़। ऐसा होता है ना कि हर वक़्त मार्केट में ये नहीं होता है कि कहाँ पे पैसा लगाए, कहाँ से निकाल ले, कैसे प्रॉफिट बुक करे, बाय सेल। थोड़ा-सा मार्केट में क्या हो रहा है, कौन कैसा प्ले आउट कर रहे हैं, किस टाइम पे एंट्री ले रहे हैं, कहाँ पे एग्जिट ले रहे हैं, तो ये सब भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होता है। तो आई थिंक यूजर्स को इसको ट्रैक करना चाहिए टाइम टू टाइम बेसिस पे। ईटीएफ के साथ ये लोग क्या-क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ है कि इंडिया में जब अगर फ्यूचर में इस तरह का कोई सिचुएशन बनता है, तो उसी तरीके से प्ले आउट इंडिया में भी होगा। तो वहाँ पे यूजर्स को पहले से ही आइडिया लग जाएगा कि कौन-कौन सा कंपनी इसमें पहले कूदने वाले हैं और क्या-क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। तो मैं उसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो करना चाहिए इसको फॉलो। So, right. यस So, सर। yep. So I think that is it for the ETF or the funds news. So coming back next is again a news by Coinbase. So Coinbase CEO has said that the exchange infrastructure is going through some outrages, and it's not because of, like, some negative or there is some problem with the Coinbase exchange, but it is more of due to the overly large volume that they're handling right now. So they have claimed that they have almost 90% of the US Bitcoins ETF custody with them. So it's around, like, something in billions. So that's why they will need an upgrade on it, which will help the platform to sustain more and become more than any traditional exchange that we see in the crypto space. So let's see, like, how, what are the new features, or how they are, gonna upgrade it to make it more sustainable in times of high volatility, and when you can see so much of institutions coming in buying, and you are the custodian of it. So that makes it like the go-to exchange in the US, and also it's listed on the stock exchange, so it's not gonna be any problem on that side, I think. Again, not financial advice for going with Coinstore and sorry, Coinbase and others, but yeah. So Shavik, what do you think about this, like, Coinbase news? Yeah, in the coming days also, the requirement of large network bandwidth and also the infrastructure could be much higher with the increase of ETF investment. ETFs. Yeah. हाँ, तो और ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पे आएगा, तो फिर आगे जाके ये स्पेशली मुझे लगता है कि हाफिंग के पहले अगर इस पे थोड़ा सा एक अपग्रेड आ जाता है, तो वो सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वोलेटिलिटी और हाई होगा, और जैसा-जैसा वोलेटिलिटी बढ़ता जाता है तब मैं एक्चुअली कुछ सिनेरियो एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इंडियन मार्केट में भी Sure. है कुछ एक्सचेंज, मैं नाम नहीं लूँगा एक्सचेंज का, बट जिस दिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, उस सब एक्सचेंज में ग्लिच आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो Right. एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही है। तो यहाँ पे कॉइनबेस एक बहुत मतलब रिनाउंड एक एक्सचेंज है यूएस का। तो वहाँ पे अगर ऐसा इश्यू आता है, तो फिर जो ट्रस्ट फैक्टर वो कहीं हद तक मिस करते हैं। तो फिर इसीलिए मुझे लगता है कि हाल्फिंग से पहले अगर ये सब इश्यू को ये लोग सॉल्व कर ले, तो सही रहेगा। Right. So let's see what are the upgrades that's coming next. So with this news, coming back to another ETF news, that is this week, Fidelity had introduced uh, a staking program, or you can say a staking fund, where you can go and stake Ethereum. And now, after Fidelity, it's like Grayscale taking up the lead, and they're adding another staking fund for the proposed Ethereum ETF that is, we are thinking, like, coming very soon. Uh, so we don't know the dates and other things, but yeah. So Grayscale is considering it and adding staking to his, Ethereum ETF, and It's on the card already. Since then, yes, it's on yes, the card, but
ये टू बी ऑन द टेबल। तो जैसे ही Right. आएगा तब तो खेला होगा तो वहां पे। Yes, and now I think like with all the Ethereum liquidity, going into staking, restaking protocols, and also the ETF coming in. So again, not a buy or sell recommendation or financial advice, but Ethereum is gonna get the second big boost after Bitcoin in the crypto space where people can trust and go, to it for different use cases. So let's see how this fund ETF and what are the ETF dates coming up. So we'll keep you updated on that. But I think due to this staking ETF protocol, which Fidelity and Grayscale is coming up with, we'll see a lot more ETH been locked in into various uh, protocols which are providing, I think, like Lido, Rocket Pool, Stader. This kind of protocols will be taking this ETH and staking it on their platform, or maybe Coinbase. So let's see like how the staking proportion increases with time as this Ethereum ETF funds grows, and what are the goods and bads that happens with it. So yeah, coming on next is Immutable, King Revo Capital, and Polygon Labs announcing a $100 million fund for gaming. So King River is like a VC firm, and Immutable X is like a blockchain with only for Web3 gaming developers focused. And Polygon, as always, have partnered with these two entities and have established $100 million fund, which is like the called the Inevitable Gaming Fund, and which will help gamers. So if anybody here or anybody circle looking at this stream is considering to build a gaming or Web3 gaming DApp, you can just apply for this fund or get in touch with them, and you can use Immutable and Polygon and get support for monetary help from this fund, and yeah, build on top of them. So I think that will be a great news coming up. So the next news is somewhat negative that we can see is like TreasureX account has been compromised, and it's not the first time or it's not the last time that we are hearing this news of account on social media getting hacked. Some days back, we mentioned one of the staking protocols also been hacked, and now this. So you can see like it's compromised, and it was used to promote a scam token, Solana token, and despite some of the protections, the hackers were able to breach in and get access to the account. Now they are investigating on the matter, and let's see how when they can get it back and the matter solves, right? So coming up next, I think we have a news from Ethereum. So Shavik, can you just take on this news? Hello. Okay, so Ethereum Foundation is like under investigation by some unnamed state authority, and according to the group's website, like on a GitHub repository, it is all written that you can see here. So they have received a notice of a voluntary inquiry from some state authority, and which will require some confidentiality. So the news is not fully out, but yeah. So I think Ethereum is under scrutiny, and we may hear some more news around it. Shavi, can we just go to the trading part? I'll just have somebody at the door. Sure. Let's discuss about the movement of BTC, Ethereum, and some of the other coins of this week. पहले हम लोग इसको सुपर चार्ट्स को ओपन कर लेते हैं. Okay, it's Nifty. Change it. Yeah. लास्ट वीक जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीटीसी का प्राइस मूवमेंट, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक हाई बनता हुआ दिख रहा है 72-73,000 के आसपास. तो वहां से एक रिवर्सल का पॉसिबिलिटी है, और रिवर्सल का जो लोअर एंड है वो 60 अराउंड 60-62 यहाँ तक जा सकता है.
तो वह भी उसी तरह से प्ले आउट है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग जो है, माइनर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो है ये फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग है। तो हम लोगों ने बताया कि फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग का जो लोअर रीजन है या फिर लोअर जोन आप लोग बोल सकते हैं, वो है 60 टू 62 के बीच में। और अगर दोबारा सेलिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा आता है तो वो आएगा आपका 52 टू 55 के रेंज के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि जैसे 60 टू 61 के आसपास आया बीटीसी, तो वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया है विथ वॉल्यूम। तो एक अच्छी काफी पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ से आप लोगों को दो चीज ध्यान में रखना होगा। नंबर वन, 70 के अपसाइड में, और नंबर टू 64 के डाउन साइड में। तो जब तक ये दो रीजन के अंदर पीटीसी ट्रेड कर रहा है, तो फिर वो जो है वो एक रेंज बाउंड मतलब रेंज बाउंड पैटर्न जो है ना वही फॉलो करेगा। तो हो सकता है कि बीटीसी यहाँ पे कुछ दिन और बिताए, और जैसा जैसा हाफिंग नजदीक आएगा वैसा वोलेटिलिटी थोड़ा बढ़ने का चांस है मार्केट में। तो आप लोग ये दो जो लेवल है अप साइड में और डाउन साइड में, ये दोनों लेवल को थोड़ा सा नोटिस करके या फिर थोड़ा सा ऑब्जर्व करके ट्रेडिंग वगैरह करोगे। आप, ये हो गया बीटीसी का। और हाँ, ये मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि लास्ट वीक को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहां से लगभग लगभग आप मान सकते हो कि 72 से 61 तक लगभग, मतलब 10% या 10% से थोड़ा सा ज्यादा फॉल आया है वहां पे। तो वो वाला फॉल जो है ना, ये एक्चुअली इस टाइप का फॉल आपको मौका देगा मार्केट में दोबारा एंट्री लेने के लिए। तो यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो वन वे रैली था यहाँ से, अब अगर यहाँ से ही मान लो 50 टू 70 20 के का जो वन वे रैली था, उसका अगर आप लोग, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको एक चीज दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। फिर रिट्रेसमेंट जो है ना वो एक बार देख लेते हैं यहाँ से। तो ये वाला अगर हम देखते हैं तो देखिए 50% रिट्रेसमेंट फिबोनाची लेवल पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, राइट। तो इस तरह का जैसे ही मतलब सिंगल डायरेक्शन या फिर यूनिडायरेक्शनल मूव आता है ना, तो वहां पे आप मान के चलो कि 50% लेवल जो है ये एक अच्छा मतलब वहां तक रिट्रेसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग स्मार्टली थोड़ा सा प्ले आउट किए हैं, वो तो यहाँ पे पोजीशंस फिर से एंट्री ले चुके हैं। और मैं जैसे कह रहा था कि 64 के 65 के ये जो रेंज है, इसको आप लोग देखते रहो, क्योंकि ये जो रीजन है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से ही काम करेगा यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से अगर दोबारा फॉल आता है तो आप लोग दो एरिया मार्क करके रखना, 52 टू 55 के। वहां पे आप लोग फिर से एंट्री ले सकते हो। और नहीं तो 60 टू 60 मतलब 60 टू 62 के, यहाँ पे फिर से एंट्री ले सकते हो। तो दो लेवल है। और अपसाइड में अगर 70 के को ब्रेक करके वीकली कैंडल का क्लोजिंग देता है, जबकि अभी अगर हम लोग देखेंगे वीकली कैंडल, ये जो है ये डोजी फॉर्मेशन है, लेकिन ये यहाँ पे बाइंग प्रेशर हम लोग को दिख रहा है। तो 70 के ऊपर जैसे वीकली कैंडल का क्लोजिंग होता है ग्रीन वॉल्यूम के साथ, और थोड़ा सा मतलब कैंडल भी अच्छा खासा बनाता है, तो फिर आप लोग ये मानते चलो कि जो बुलिश पैटर्न है, वो बुलिश ट्रेंड है, वो कंटिन्यू रहेगा वहां पे। ठीक है, ये बीटीसी का हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इथेरियम का क्या हुआ है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो रीजन है, यहाँ से एक बार माइनर प्रॉफिट बुकिंग आएगा, क्योंकि ये सिंगल साइड रह गया। इस तरह से मार्केट मतलब अगर सीधा ऊपर जाएगा तो फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, एक ना एक पॉइंट से वहां पे, और बहुत जल्दी नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएगा। तो अगर मार्केट को सस्टेन करना है और अ, सही तरीके से प्ले आउट करना है, तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग माइनर आना यहाँ पे चाहिए, और हुआ भी वैसे ही है। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आया है, और इसका जो लो बनाया था वो ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि 30 60 के आसपास बना था। तो वहां से जो लोग अभी दूसरा बार, मतलब जो लोग इस रैली को मिस कर गए थे, तो मेरे हिसाब से वो लोग यहाँ पे पोजीशंस बनाए होंगे, तो अभी भी काफी अच्छा प्रॉफिट में होंगे। और इथेरियम का जो लोअर लेवल है वो मार्क करके रखना चाहिए आपको 300। 300 के नीचे आप लोग देख सकते हो कि वहां पे एक बार और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है टिल 3000। और अपसाइड में अगर आप लोग देखोगे कि 3600 को क्रॉस करके अच्छा खासा क्लोजिंग देता है, तो फिर वो एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा इथेरियम का पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं और एक दो चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। अ, हाँ, ये जो मार्केट का मेजर फॉल हुआ था, तो आप लोग नोटिस करोगे कुछ पर्टिकुलर कॉइन्स में फॉल बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ कॉइन्स में तो काफी फॉल हुआ हुआ है, जो कि अभी भी उस प्राइस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा।
अपॉर्चुनिटी में थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन आप लोग अगर क्लोजली मॉनिटर करोगे 2-3 कॉइन को, जैसे एक हो गया एवैक्स, दूसरा हो गया सोलाना, ठीक है, और भी बहुत सारा कॉइन्स है। तो इस टाइप का कॉइन जो है ना, तो उसमें जो है उसमें और सोलाना ब्लॉकचेन का जो लेयर 2 मतलब ये है, कॉइन्स वगैरह है, तो वहाँ पे भी आप लोग देखोगे कि जो कॉइन्स है, थोड़ा बहुत कॉइन्स में मूवमेंट था जब मार्केट रेड था पूरा, लेकिन वो सब कॉइन्स में बाइंग वगैरह चल रहा था। तो उस कॉइन्स को भी आप लोग थोड़ा सा वॉच लिस्ट में डाल के रखो, क्योंकि वहाँ पे पोजीशंस बन रहा है, कोई ना कोई तो है जो मार्केट सेंटिमेंट खराब है लेकिन वहाँ पे पोजीशंस बना रहा है। तो हाँ, इसी तरह से आप लोग अच्छा अच्छा कॉइन्स को फाइंड आउट कर पाओगे, और वो बियर मार्केट में मतलब प्रॉफिट बुकिंग के टाइम ही आप लोग पता कर सकते हो कि कहाँ पे पोजीशन बन रहा है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। So Shravik, can we just go back to the news that were left? Like I think there is two या news श्योर that श्योर is left. श्योर, व्हाई नॉट, Yeah. यू आर द बॉस हियर। So I think that's सो that was done. So we'll let you guys updated about what happens to the inquiry about Ethereum Foundation once we get more uh, news from them after the confidentially is lifted. So coming to another hack that happened is it's about layer swap. So it's a bridge that was hacked some days or some no 1 2 days back, and now they have regained control of it, and it's fully operational and safe right now. So I think they have some domain issues, like somebody got access to their domain and took the site down and put up a random site where it was like a phishing attack kind of a thing. So I think it's not much that they have lost. So around 100K worth of tokens or value have been lost. So they have just assured the community that they will refund all the people who have been affected by this, and they will also give some bounties for those people. So if you are using layer swap, or if you have been affected, there is no problem on it. But with this, I'll just like to tell one thing, कि अभी आप देखोगे बुल मार्केट जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो बहुत सारे हैक्स, ये सब सोशल मीडिया प्रोटोकॉल्स, तो बहुत सारे हैक्स हो रहे हैं। तो थोड़ा सा देख के आप यूज करो जो ब्रिजेस या जो स्वैप्स आप यूज कर रहे हो, ताकि ऐसा ना हो कि आप स्वैप आप बिना जाने कर रहे हो एंड यू आर पुटिंग इट ऑन द रॉन्ग अकाउंट और रॉन्ग प्लेस। बिकॉज अभी क्योंकि आप शायद उनके सोशल मीडिया वेबसाइट से ही जाके देख रहे हो, बट वेबसाइट ही शायद हैक हो गया, सोशल मीडिया हैक हो गया। तो थोड़ा सा वेट कर जाइए, ऐसे फोमो में बहुत कुछ ऐसा दिख जाएगी, एयर ड्रॉप दे रहे हैं या टोकन्स फ्री में मिलने वाले हैं, वैसे में जल्दी से ना उसमें इन्वेस्ट करिए। थोड़ा देखिए, न्यूज़ आने तक रुकिए कि वो हैक है या रियल न्यूज़ है, उसके बाद करिए। तो चलिए उसके बाद लास्ट न्यूज़ पे आते हैं, क्योंकि हम लोग एयर ड्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज लाइक मोड ऑफ एयर ड्रॉप सीजन कमिंग अप एज द बुल रन इज गोइंग। सो एडू 3 लैब्स एक कंपनी है, उन्होंने अभी एक एयर ड्रॉप हंटिंग प्लेटफॉर्म लाया विच इज लेयर्ड ऐप। सो इट्स ऑन देयर इनिशियल स्टेजेस राइट नाउ, and you can go there and check out the latest airdrops and hunt them. So I don't think like there is much of airdrops right now. 3 4 airdrops आपको वहाँ पे शायद दिखेंगे, but as with time this platform will also, I hope, progress. It will have more of the airdrops, and you can get more updates about the airdrops from this platform. So wanted to share it with all the community here. So if you are hunting airdrops actively in this market, check them out, and yeah, just give them a look and let us know like what you feel about the platform. So that's it, I think, from my side as well. And Shavik, we have any other thing to discuss? Yeah, I think we can take a look at the comments if anybody has anything to ask. Right, so I don't think we have any comments till now. So guys, if you are watching this on any of the platforms, do make sure you comment or ask your questions so that we can take it up in one of these live sessions and answer them, or to give us suggestions on what topics you want us to discuss and talk about. We'll try to bring those topics up, bring those experts to have this live session more lively. So with this, I think we are done for this week. We have covered the news updates and the market conditions.
So thanks all for joining in, and hoping to see you next week as well. And yeah, do follow us, subscribe to our channel so that we also get a motivational boost, and keep making profits, keep learning about crypto and Web3. See you again very soon. Thank you. Yeah, thank you so Bye much. bye. Bye bye.